हाय एंड वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसकी डिफिनेशन इस तरह होगी कि अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स यूजुअल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच हम उन वर्ड्स को या फ्रेज को कहते हैं जो कि आम मीनिंग में, आम एवरीडे लाइफ में जो मीनिंग उसकी हो उससे डिफरेंट यूज़ हो। या फिगर ऑफ स्पीच राइटर्स इसी वजह से यूज़ करते हैं कि जो आर्ट है या जो राइटिंग है उसकी जो मीनिंग है वो मोर क्लियर हो, डायरेक्ट हो, राइट? फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट figure of speech is an expression or word or phrase that is used with a metaphorical rather than a literal meaning। जहाँ पर हम literal meaning के बजाय metaphorical meaning की तरफ जाते हैं, like an expression that uses words to mean something different from their ordinary meaning। राइटर्स फिगर्स ऑफ स्पीच को इसीलिए यूज़ करते हैं टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन अ रीडर और अ लिसनर। अब इस रीडर्स या लिसनर्स पर हम एक मीनिंग की इफ़ेक्ट को ज़्यादा कैसे करेंगे? तो हम कंपैरिजन करेंगे, हम एसोसिएशन करेंगे, हम एग्जैजरेशंस करेंगे, हम मीनिंग्स बनाएंगे, हम लिटरल मीनिंग के बजाय मेटाफोरिकल मीनिंग की तरफ जाएंगे। तो इसी वजह से इस मीनिंग की इफ़ेक्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो कि राइटर यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? टू क्रिएट अ मोर पावरफुल एंड डिस्टिंक्टिव एंड प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द रीडर and to make the meaning very clear and direct. For example, there are a lot of different things that you can do with figures of speech, like you can see an example on your screen right now. Now, there are a lot of different figures of speech, and we will discuss each one of them in separate videos. And thank you for watching.